Listen, students, we must proceed from social inequality, exclusion, and movements. Listen to me, students. What is the meaning of social inequality? In every society, some people have a greater share of valued resources, money, property, education, health, and power than others. Listen here, students. जितेबाला प्रत्येक समाज रे हमें देखो ये कहीं सुजाता मुझे कौन होता now listen प्रत्येक सोसाइटी रे कौन होते हैं स्मृति almost all of attention किछि किछि लोक माने भलो फायदा पाई थांदे कार मनी रो प्रॉपर्टी रो एजुकेशन रो हेल्थ रो पावर रो आउ किछि किछि लोक माने नेग्लेक्टेड हेई थांदे पाई न थांदे patterns of unequal access to social resources are commonly called social inequality. Social inequality हमें कहाँ को कहूँ ना जिते बड़े सबू लोक माने इक्वाली शेयर रे तंपर जेते किटा थ्रेशोल्ड पाइबा कथा सेति के पाइले नाही रिसोर्स सेक्टर रो हमें कहलु जे social inequality. It reflects innate differences between individuals, for example their varying abilities and efforts. Example हमें कहिबा बहुत गुडे लोकंकर एफर्ट अच्छी एबिलिटीज अच्छी स्टिल जन सोशल फील्ड रे से सक्सेसफुल हे पर नहांती. It is not the outcome of innate or natural differences between people, but is produced by the society in which they live. Actually society रे ए टाइप रो डिफरेंशिएशन किछि क्रिएट. एग्जांपल मु कहिबे आमे मानक भितरे वर्तमान फ्री कंपटीशन हो. फ्री कंपटीशन रो तीन जन जो आगे रे छथि से माने कंपटीशन पे ट्रेनिंग लेले ताका पे स्कोप अछि पछरे जो तीनटा बेंच रे नियर अबाउट रहिला हमर 15 जन भଳି पिला से माने किछि ट्रेनिंग मिलिलानी ऑटोमेटिकली जो मन ट्रेनर अछथि आगुरु किछि कोचिंग नेजन दे आर द गेनर्स. तने सोशल फील्ड रे एमते बहुत लोक अछथि ताको रिसोर्स तर आरंभ करी टेक्निक तर आरंभ करी मॉनिटरी कंडीशन तर आरंभ करी किबा प्रॉपर्टी फील्ड आमे मध्य ताको कोन करू ता डिस्कस करी. सो स्टूडेंट्स hierarchy, stratification, class divisions are notions used by sociologists and anthropologists to describe social inequality. Stratification is a feature of modern industrial societies in which inequalities do exist. So students, ये जो social stratification कौन पाई है थाई, बा ये जो differentiation कौन पाई है थाई, social inequality कौन पाई है थाई. First point hierarchy. मैं example कही भी political field रे entry करिया को गले तम पाखरे सेति के फाइनेंशियल रिसोर्स रहबा दरकार किबा आमे देखु कोन मु भी बहुत थर तुमको क्लास रे कहि छी जति तार पेरेंट्स रे ग्रैंड मदर किबा ग्रैंड फादर किबा ग्रेट ग्रैंड फादर पॉलिटिकल लाइन रे थिबे तांकर जनरेशन पॉलिटिक्स रे एंट्री करिबा पई गोटे सिग्निफाइंग फीचर आसीबो गोटे एक्नॉलेजमेंट आसीबो दैट इज नथिंग बट हायरार्की. सेकंड पॉइंट स्ट्रैटिफिकेशन. प्रत्येक समाज को हम डिवाइड करछे स्ट्रैटिफाई करछे आमे जेतले पर्टिकुलरली कहूचे गोटे गोटे फंक्शन अछि वुमेन मान को रिजर्वेशन मिलिबो वुमेन मान को पई एटा रेफरेंस रे रहिला चल जो माने वुमेन नुती विशेष करी मेन पर्सनालिटी से मान सेठी कोन हेले इनइक्वालिटी प्रोसीडर के आसिले ताकू किछि सेमति प्रोसीडिंग्स मिलिला नै. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्लास डिविजन्स. यदि क्लास बेसिस रे मु कहिबे जो माने टॉप मोस्ट लेवल रो मु उदाहरण स्वरूप कहिबे वर्तमान गोटे एंट्रेंस ओरिएंटेड कोचिंग स्टार्ट करी कॉलेज छकरे जो माने सिक्योर करथिबे 80% दे आर वेलकम जो माने 80% रखिथिबे समान को वेलकम करा गला तले पिले बहुत भी टैलेंट अछंती जो माने 79% रखिछन जो माने 79.9 रखिछंती से माने आधे कोन हेले सोशल इनइक्वालिटी भीतर रहले ना नै बड़े बड़े एमिति. सो स्टूडेंट्स आर नोशंस यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सोशियोलॉजिस्ट मैन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मान के एतिक रहला फैसिलिटीज to describe social inequality. Stratification is a feature of a modern industrial societies in which inequalities do exist. एवं social stratification modern society रे exist करूची जोडी प्रकृति रे social inequality हमें पाउछु. मैं एग्जांपल कहबे तम मान के भीतर बहुत आदि कोन पुओ पिला माने कोडे पळे जाय छै सब सुभद्रा जो जाना और देखो तेणु धर जो तम मान के भीतर वर्तमान गोटे प्रोग्राम मु करिबे कोड ना बादाम बाडी रे हमर पर्टिकुलरली शीतल होटल सेठी कि जो माने ही जिबे मु कहली स्पेशल जिबे पुओ माने किंतु जियो मानकर इंटरेस्ट अछि जियो माने सरी सेकुलरिज्म हेले बाहर रहले ना नै एमती बहुत गुडे फंक्शनलिटी अछि
सोशल इनइक्वालिटी अछि जोटी हमको कोन ना कोऑर्डिनेट बा कोऑपरेट बा confinement को आसे अपन किछि प्रॉब्लम होउची and the vital factor is social inequality. So students, caste and social inequality. Social inequality is a perennial feature of every society. If we cast our glance around the world, we find that it is heterogeneous in nature. Everywhere, society into divided into various groups or classes. जोटी कास्ट अछि सेठी सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करूछ तला हमर कहिबार उद्देश्य होची एग्जांपल कहिबे केति बर्तन हमर गोटा कमिटमेंट आसीबो गोटा कंपटीशन आसीबो वेद पाठ करियो मु कहली स्पेशली फॉर ब्राह्मण्स किंतु आदेर गोटे क्षत्रिय पिला अछि किंबा गोटे शूद्र पिला अछि जे कि वेल वर्स्ड ताको सेटा कोन हला एक्सक्लूजन करा गेला बहिष्कार करा हे गेला दूरे की से रहिला आमे तो फर्स्ट प्रेफरेंशियल दे देले कास्ट बेसिस रे पर्टिकुलरली ब्राह्मण मन के छड़ी अलगा जो मन रहले से मन कोन हले ना ए जो रिजोल्यूशन बा प्रोसीजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करि परलेनी दैट इज नथिंग बट एक्सक्लूजन और सोशल प्रॉब्लम हो जाड़ा छेद बा Listen students, social inequality is socially created inequalities. Pattern of unequal access to social resources, opportunities, and valued objects are commonly called social inequality. Sociologists use the notions such as hierarchy, stratification, caste, and class division to describe inequality. Caste system is a major type of the social stratification. Okay. देखो, जेतेबेले आमे कास्ट सिस्टम को जाउचे इन दिस सेंस, सेतेबेले आमे सोसाइटी रे गोटा सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करछु. जदियो बहुत दिन तळर कथा पर्टिकुलरली वी शेयर दैट इट इज नॉट कांसेप्ट ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड हितला केबेठारु वेद उपनिषद सुपास वेद कहले ब्रह्म कहले ज्ञान यदि करेस्पोंडिंगली हमें देखिबा एके पिले उठी जाओ बसी जाओ पिला का नाम बैठा काट देबा. Listen students, so social inequality जो ऑब्जर्व करू जेबे सोशल इनइक्वालिटी के हमें केबेले डिमिनिश करि परिबा नाही किले मेडी करिबे एई हमरा अछि कोचिंग रे बसचे हम मन भीतर पण इक्वालिटी अछि सो फॉर एज ड्रेस इज कंसर्न ड्रेस इक्वालिटी so far as knowledge is concerned equality so far as finance is concerned equality is not maintained then हमें जदि कहिबा हमर स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट आल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तल हमें कहिबा हमर प्रत्येक स्टेज रे प्रत्येक सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करछि ना नहीं एग्जिस्ट करूतिला करूछि आगु मध्ये करी कारण नेचर हमको इक्वालिटी किछि सपोर्ट्स करे नेचर हमको इक्वालिटी पोटेंशियल इक्वालिटी देइना जदि गोटे टॉल लोक की अछि फैट अछि ताकू जति के नॉलेज नाही नेचर भी एमिति दे जंदी गोटे शॉर्ट बा गोटे गेडा लोक को हमको अपॉर्चुनिटी का नॉलेज दे तो नेचुरली हमें जदि कंसीडर करबा इक्वालिटी इज ए मीन एट हाउ टू गोटे लंका रे भरि शब्द बोली. सो स्टूडेंट्स, लुइस डोमोंट considers the inequality of the caste system is a special type of inequality. Of course, every society is caste driven and the caste system exists among the most advanced societies of the world in one form or the other, but it is a peculiar Indian social institution. पहले एटा गोटे विचित्र इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन कौन सोशल इंस्टीट्यूशन रे जदि गोटे ह्यूमन बीइंग के हमें कंसीडर करबा तमे कोह जेतेबेले मनुष्य जन्म ग्रहण करूछंती छोटो छुआ माने ऑलर इक्वल किंतु जेतेबेले तांका बार्थ को बेस करके हमें सर्टिफिकेट देउ जे सेठी वेरिएशन आसीला on the basis of the determination of caste सेतेबेले हमर कोन होतना कि डिफरेंशिएशन आसी जाउची नले जदि ऑलमोस्ट ऑल हम कंसीडर करबा so far as the epitomization is concerned we are all equal in the social political and whatever field you can consider but what varies from person to person that is our so called caste structure हमर किछि खास करके ब्रांड नाही कास्ट रो जो ब्रांड अछि आमे ही ताकू सृष्टि करी छै कास्ट रो ब्रांड ब्राह्मणी कोन कोडी गोटा हम देहरे किछि सिम्बोलॉजी काम को बोले ओइताटा आमे करी छै पूजापटा आमे करू छै so it varies from person to person with the caste it can to be the gratification so Louis Dumont considered the inequality of the caste system is a special type of inequality. यदि हम इंडियन सोसाइटी और भारत रो समाज रो परंपरा को लक्ष्य करिबा प्रत्येक जगह रे गोटे डिस्क्रिमिनेशन अछि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ड्रिवन सोसाइटी
India ର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଠି କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ ଅଛି। Of course, every society is a caste ridden, and the caste system exists among the advanced societies of the world in one form or the other, but it is a peculiar Indian social institution. କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି, ଏ ଲାଇନ ଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହେଁ। ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ୱାର୍ଲଡ ରେ କେବେ ଦେଖା Indian society ଆମେ ପଢୁଛେ Indian ବାବଦରେ କହିବା, and it is peculiar so far as Indian social institution is concerned. The caste system in India is in place from time immemorial as a traditional basis of stratification. Caste as a distinctive system is responsible for inequality in Indian society. यदि ट्रेडिशनल बा एंशिएंट एज को हम कंसीडर करिबा ताले प्रत्येक जगह रे हम भी गोटे कास्ट रो किछि इंपोर्टेंस रहिछि एवं ऑलमोस्ट ऑल आर गाइडेड बाय कास्ट सोसाइटी। दो इट हैड इट्स ओरिजिन इन द हिंदू फिलोसफी ऑफ वर्ण व्यवस्था, इट हैज रिजल्टेड इन द परसुएशन। जेतबे वर्ण आश्रम धर्म कथा हम कहलु, वर्ण को बेस करके गोटे सोसाइटी रे किछि डिवीजन कलु, तो इट हैड इट्स ओरिजिन इन द हिंदू फिलोसफी ऑफ वर्ण व्यवस्था। विशेष कर लोक मान जो विभिन्न प्रकार कलर रहला ताको बेस करके कोन कहले फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बा डिवीजन ऑफ लेबर, एवं सेही डिवीजन ऑफ लेबर हमको आइडेंटिफिकेशन कला कि पर्टिकुलर कास्ट। अच्छा, वर्ण व्यवस्था कोन कहले हमको ए सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइस्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। गोटे सोसाइटी केमिति कोन प्रॉपर वे फंक्शन करिवो। उदाहरण स्वरूप कहबी ये फर्स्ट लाइन जोटा रहले ये गोटे कास्ट, सेकंड लाइन आ गोटे कास्ट, थर्ड लाइन गोटे कास्ट, फोर्थ लाइन गोटे कास्ट। हम विपर मोर बर्तन हम कास्ट करना हम दी जन बड़ सन्यासी, तेणु ये जो फर्स्ट लाइन रहले ये जो कास्ट हेतिबे तांकर से भଳି अछि कोनटा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कौली प्रवृत्ति अछि। से माने कोन कले तांको परफॉर्मेंस कले, जब तांकर कोन कले स्पेशलाइज्ड कले डिवीजन ऑफ लेबर मध्ये तांको पय आसी गला, तांकर आ कोनसी कॉन्फ्लिक्ट तम मानकर सेति कॉन्फ्लिक्ट नाही। किंतु जेतेबेले आमे कोन कले कॉन्फिडेंटली सबडे समस्त कोन कले परफॉर्मेंस कले जे कोनसी जॉब कॉम्प्लीमेंटेशन को आसीले यूनिवर्सली सेतेबेले हमर कन्फ्यूजन आसी को पर्सन को बड़ी प्रकार परफॉर्मेंस करि परिबो, एंड इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बर्तन आमे जो मॉडर्निटी के आसी एक्चुअली कास्ट बेसिस रे कोन आमे जॉब परफॉर्मेंस करूचे, ए जॉब परफॉर्मेंस करू जदि हमें देखिबा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण माने थिले कोन रिलेटिंग टू ब्राह्मण मान पर कोन थिला नॉलेज केतरे ब्राह्मण माने रहे। क्षत्रिय माने आसीले कोन की डिफेंस सेक्टर को, वैश्य माने आसीले कोन ट्रेड, आ शूद्र माने आसीले लेबर। जेते कंसीडर करिया वर्ण श्रेणी करा, इट एक्चुअली दैट कॉन्फिगरेशन हैज बीन चेंज्ड। वी आर गिवन fundamental rights to perform any job according to our own choice. Next, but later on it became a rigid system based on birth and hereditary occupation. At this stage, Varna got transformed into caste. Equality and social justice was inherent aspect of a traditional system of Varna hierarchy. But inequality, it is an inherent aspect of a caste system. It creates a special type of inequality among caste group and individual society. And the student when we consider caste system ता प्रकृति गोटे सोसाइटी रो रिमूव होई परिबो केतेबेले यूनिवर्सल एजुकेशन बा मॉडर्न एजुकेशन सक्सेसफुल हो। तमे वर्तमान एठी कास्ट गोटे क्लास रो छ, तमर एठी किछ कंसीडरेशन अछि कि कास्ट बेसिस एठी वर्तमान तुमर क्लास बेसिस रो कंसीडरेशन अछि, इट इज स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी क्लास। Try to understand my point of view, and we have categorized ourselves on the basis of knowledge. तेणु पिले जेतबे मॉडर्न एजुकेशन आसीबो ऑटोमेटिकली कास्ट सिस्टम ता वी मस्ट द फैब्रिक ऑफ कास्ट सिस्टम मे बी चेंज। कास्ट सिस्टम परपेचुएट्स सोशल इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग वे। कास्ट सिस्टम प्रकृति रे सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करथाय गोटे समाज रे कि बड़ी फर्स्ट caste system is always characterized by a hierarchical arrangement in establishment. Like there are some castes which are considered superior to others. This hierarchical arrangement of a caste is according to different degrees of dominance and privileges, which creates inequalities in society. पिले केतेटा प्रिविलेज रहिला किछि किछि पर्सनालिटीज पाइ जोटा प्रकृति रे गोटे सोसाइटी रे इनइक्वालिटी क्रिएट मु तुमको कहले केबे भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सारलेनी जे कोन से व्यक्ति विषय यदि वेलनेस प्रति व्यवसाय रे सांस्कृतिक लिटरेचर रे से मध्यम प्रोसेसिंग करि किंतु ट्रेडिशनली हमर गोटे रहिछि जे ब्राह्मण मान पर एटा होछि फिक्स्ड ऑक्युपेशन। ब्राह्मण पिला माने मंत्र पटे जानो त जानो से यदि बसी गले के पानी छिटि देले आमे गले स्थानटा पटि जाय
ये समय आसुची धीरे धीरे किछि न किछि मेमोरेंडम रे चेंजिंग आसीबो बट स्टिल देन स्टूडेंट्स हम यदि इंडिया रे देखिबा कास्ट सिस्टम पर कंसीडरेशन करिबा ताले कास्ट हायरार्की जे दे टॉप टू बॉटम जाके हमर किछि कोऑर्डिनेशन रहउची कास्ट सिस्टम perpetuates social inequality through the ideology of purity and corruption. Higher caste people are believed to be more pure and less polluted, while lower caste people are less pure and more polluted. देखा बिले हमें कहिबा प्रकृति रे मनुष्य ପାଇଁ ଯେତେ ବି क्वालिटी अछि सबठारु वर्तमान बेकार एम्फासिस ଆମେ दउचे एजुकेशन और सैनिटेशन लोक माने समस्त हमें एठी आश्चर्य में तुम खाई के आछो हम जानि परछे ସେମାନେ ऑटोमेटिकली हमको प्लसेस मिलछि हमें को जगह रहउचे दैट डजंट मैटर इट इज श्योर नॉलेज स्टिल देन लिविंग कंडीशन इज हमें भलो जगह रहउचे भलो जगह रहउते हम रूप गुण जाना पड़ जाय किंतु गोटे जिनस हमर वेरिएशन अछि relating to education and sanitation हमें जत्ते सोचते रहिबा गोटे टर्म अछि cleanliness is the other name of godliness जागाटा जते परिष्कार परिष्कृत जागाटा हम पई जते फैशनेबल हे परिबो हमको टिके आई कैचिंग हे भलो लागिबो टू सस्टेन आवरसेल्फ तेनु पिले देखिबा हमें जो कहूचे ब्राह्मण कास्ट माने कोन सब ब्राह्मण माने परिष्कार परिच्छन्न छन क्षत्रिय समस्त कोन परिष्कार परिच्छन्न वैश्य समस्त कोन परिष्कार परिच्छन्न शूद्र समस्त कोन परिष्कार परिच्छन्न तेनु जेते बेले जो ग्रुप लोक माने निजको निजे टिके सैनिटाइज रहिबे निजको निजे टिके वेल फैशनेबल रही परिबे वेल ड्रेस हेई परिबे आ सबटर बड़ କଥା वेल कम्युनिकेबल करिबे ताको भाषार किछ माधुर्य थिबो मास्क माछर मानकर भाषार टिके परिष्कृत थिबो अर्थात निजको निजे लैंग्वेज रे ताको कम्युनिकेशन रे जेंति वेल डायरेक्टेड रहो ताल आमे से माने वेल सोफिस्टिकेटेड कास्ट मॉडर्न नेचर कंसीडर तेनु पिले ए जो लाइन का कहि देखो जे पोल्यूटेड आ मोर पोल्यूटेड को लोक को हमें पोल्यूटेड कहबा मोर पोल्यूटेड कहबा तमे जदि कोन से लोक बर्तन पोल्यूटेड कहिलो से संगे संगे तुम्हार आरे गोटे एफआईआर लॉन्च करिबनी तमे कोन पई ताको पोल्यूटेड कहली जे तार जा जेति केछि घरे सेति के से यूज कला सेति किटा डेकोरम मेंटेन कला तर जेति के फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अछि सेति के नै कि से निज निज सोप कला हमें यदि अनऑथराइज्ड का ऊपर इंटरफेयर कले वी मस्ट बी पेनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ so students that point caste system perpetuate inequalities in society by imposing restriction on the choice of this caste system जे परते एग्जिस्ट करथिला से परते कोनथिला चॉइस ऑफ ऑक्युपेशन फिक्स्ड हे रहिथिला कि को ऑक्युपेशन करिबो नले सोसाइटी रे ताको डिबार करा दिबो उदाहरण स्वरूप तमे जानिथिबो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वॉशरमैन जोटा का में को रोग से माने कोन करिबो अलगा कास्ट रो कपड़ा नै कि सफा actually it is very costly in the modern society it is not applicable still then this tradition is existing ये भी सुधा तमे देखिबो जदी का घरे एमति तो नाही का घरे के एजेड लोक हो कि यंग ये जो पिला के एक्सपर्ट माटर दिस से माने न आसिले एटा हमर स्टैंडर्ड आसीबोनी से माने आज ऑब्जर्व न करिवे हम फंक्शन सेटा सोच हेबो नै ये ट्रेडिशन एबे भी अछि एबे भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करछि ब्राह्मण मंदिर तो बार-बार पारिवारिक घर मंदिर ये माने कौन से प्रकार सोशल साइंटिफिक और सेरेमनी पाई दे आर द वेलकम रिप्रेजेंटेटिव्स नेक्स्ट caste system perpetuate inequalities by imposing vital restriction or by prescribing endogamy practice caste endogamy is strictly enforced where members of a caste has to marry within one's own caste आउ कोटी सबटर बड़ प्रॉब्लम रहउची सोशल इनइक्वालिटी रे endogamy since you belong to a particular caste and your mate selection must be held on the basis of the particularization of the same हमें जो कास्ट रो छ से कास्ट भीतर तुम्हारा कोन करा जीवो ना जो विशेष करी मैरिज सेरेमनी गुडा को सेटल करा जीवो दैट इज सो एक्चुअली एट द प्रेजेंट सिनेरियो कास्ट सिस्टम इज perpetuating its power it is not actually appropriately utilized by almost all the honorable or educated personalities of Indian society concerned Indian society रे आउ कास्ट बेसिस जो सिलेक्शन थिला धीरे धीरे कमी आसिलानी going to the rampart due to modern education the concept of globalization and when we are actually facing the challenge relating to the restriction of women folk आजिकली समाज रे वुमेन folk मान पर restriction आसिलानी तमे गोटे कम्युनिटी रो वुमेन मान को जीव एक्चुअली सेति के मेल अनुदे फीमेल मध्ये मिलुनाती so there is I mean rampant intercaste marriage
So, caste system perpetuates social inequality by imposing several social religious disabilities on different castes. Under this system, the Brahmins are the most privileged, where as Sudras are least privileged. Sudras are debarred from entering into temples using public roads and wells. This concept is a traditional actually students. Sudra mane आगे कौन किला लेकिन तमे जानि थको महाराष्ट्र जो माने रहउथिले पर्टिकुलरली हमर महाराष्ट्र हो किबा केरल रे हो सेति कोन होतिला ना अनटचेबल कास्ट माने गार रास्ता दे के जाउ नथिले सेति पई सोशल रेस्ट्रिक्शन थिला गवर्नमेंट कोन कले पिले पर्टिकुलरली तुमे जानि थको बहुत गुडे प्रोग्राम लॉन्च दैछि रिलेटिंग टू हमर गुटे अछि एससी एसटी कमिशन से कमिशन को बेस करी कौन सी गोटे कास्ट बेसिस रे आमे काहा को दिस आरम करि परिबन यदि कास्ट कंसीडरेशन करले then we must have to be penalized according to code of law only हमको penalize करा जिवो तो कास्ट डिस्क्रिप्शन नाही और सोसाइटी रे कास्ट कंसीडरेशन नाही किंतु कौन अछि से कंसीडरेशन टू सर्टेन एक्सटेंट in the modern periphery in the modern climax it is getting to the class consideration तमे गोटे टॉप लेवल लोक अछ जनका बापा जन एसबीआई रा मैनेजर से तंत्र सही लेवल जनका बापा जन एसबीआई रे अछन फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय पीएन अछ से तंत्र सही लेवल लोक that understand caste system perpetuates social inequalities by imposing different kinds of restriction on eating drinking and social intercourse a brahmin cannot accept food or water from the shudra and shudra can't mix freely with a higher caste people essentially आदिके से कंसीडरेशन ना रूरल एरिया रे तमे मन रख कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करिथिला जे पर्यंत रूरल कम्युनिटी रो डेवलपमेंट हो आकांक्षा फर्स्ट ईयर और बापा कोनी बते कोन फोन कर चार से बजा सातन ना आज को किसी ने मुझसे हमको कोफ ले देखो caste system perpetuates social inequality by imposing different kinds of restrictions on eating drinking and social intercourse populace a society रे first time negligence है on the basis of caste order in the sense तमे एबे भाबी करू ना ए सोसाइटी रे कास्ट कंसीडर को बेस करके बहुत किछि इनह्यूमन एक्टिविटीज बहुत जगह रे झियो माने मध्ये ह्यूमिलेटेड होउछन फैमिली मेंबर मान द्वारा आ बहुत जगह रे बहु माने मध्ये ह्यूमिलेटेड होउछन अंतर मदर इन लॉस मान द्वारा फैमिली मेंबर मान द्वारा व्हाट इज द रीजन द रिजल्ट इज दैट इज ट्रेडिशनल ऑब्वियस जेतेबे पिला आमे कहिबा आमे गोटे अर्बन सोसाइटी के आसीले तमे कहिलो धरा जाओ मु जे गोटे शूद्र लोक मु गोटे करछि चिकन सेंटर मु गोटे करछि धरा जाओ मटन सेंटर मु गोटे करछि फिश गोटे ब्राह्मणी घर रो पुओ गला हम पेपर मो पकड़ किणी के नौछि ना नहीं सेति कोन कास्ट कंसीडरेशन अछि यदि कास्ट कंसीडरेशन करिबा तल हमको मिनिमम आ 200 वर्ष तल को फेरि जो पड़ी मॉडर्न सोसाइटी हमको अप्रूव करिबनी जेतेबेले वर्तमान कांसेप्ट आसिलानी चंद्रायन किबा जेतेबेले हमर कांसेप्ट वर्तमान आसिलानी हम केमिति कोन जाई पर्टिकुलरली किछि सिग्निफिकेंटली ऑनलाइन बा डिजिटल सिस्टम रे हम डेवलपमेंट करिबा सेति सेति कास्ट ऊपर हम एम्फसाइज करिबा इट इज नथिंग बट आउटरोडन ऑफ आवर सोसाइटी डाउनरोडन ऑफ आवर सोसाइटी आउट कास्ट सिस्टम क्लास सिस्टम मझिरे मझिरे आसीबो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्निटी on the basis of business career monetary satisfaction still then it is not existable so eating drinking and social intercourse तमको शोष होची कि मैं गोटे पानी बोतल किनि के आनु छ तम कोन दुकानी की पचार छ अपन कोटा बाड़ी दुकानी तमे नंबर बना गोटे कोन पास बस रे जाउ छ सीट रे गोटे स्वच्छ परिष्कार परिच्छन्न नै के तमे बसिथिबो तम साइड रे गोटे काचू कुंडिया वाला लोक आसी बस ए गुड पोळा तुमको पैसा दे जेली बसी आजकल दुनिया रे हम किछि कहि पारि किंतु जने लोक जेतेबेले तार कोन से प्रकार डेफिशिएंसी अछि एटा सिविल सोसाइटी कहउची हाउ दैट डेफिशिएंसी मस्ट बी प्रीऑक्युपाइड हाउ दैट डेफिशिएंसी मस्ट बी फुलफिल्ड हमको सोशल होबा को पड़िबो हमको परिष्कार होबा को पड़िबो हमको सिविलाइज होबा को पड़िबो हमको ऑनरेबल होबा को पड़िबो इट इज मॉडर्न सोसाइटी रे समस्त जानि छथि कोटा ठीक कोटा भूल भूल गुडा को सीक्रेट रखा जाय ठीक गुडा को रिवेल करा जाय किंतु भूल गुडा को जदि हम रिवेल करे दउ इट इज नथिंग बट डिग्रेडेशन ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम
Try to understand my point. What I am telling it about it is sociology. तमर समस्त गोटे सोशल प्रेस्टीज अछि समस्त अन्वेषर अछि अभिचार अछि समस्त अछि ना नहीं से सोशल सिस्टम रे सोशल स्टेटस को तमे जदी लॉन्ग लास्टिंग करिबा को पड़िबो then you must have to reserve your value system for a long point of time. तमे तम वैल्यू टा को मेंटेन करिबो that we are civilized humans, we are civilized personalities, we are decorum mainting boys and girls. Then and there the society will give you clarification relating to proper characterization. Unless and until you are sure, unless and until you are free and frank, unless and until you are educated, no society will approve your spontaneity. कौन सी society हमको इज्जत देगा? Try to understand my point. So I may be well educated, maybe well earning, maybe well house, maybe every type of decoration. If I became a drunkard, can anybody approve my character? Nobody is. That happens to be. केवल मैं एतिकी हम ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को टोटली 11टा पॉइंट जज करूछंती 11टा पॉइंट को जज करी हम वैल्यू सिस्टम का सिथाउ एवं जेतेबे सेतिकीटा फुलफिलमेंट हो जाय ए समाज हम रेस्पेक्टेशन दिए. So students, caste system perpetuate inequalities by imposing different kinds of restrictions on eating, drinking, and social intercourse. Actually, students, when we consider ourselves eating, drinking, and social intercourse, पहले हम माँ जो हाथ रे हमको पानी दियंतु हमें माँ को कहबानी मामा तुम हाथ फाथ भल कि धोई हमको पानी देबो एटा होची एक्चुअली आवर मिसकंसेप्ट. किंतु अलगा जो लोक जेते बेले हमको पानी दियंते हमें कोन देखो हमें तंग टिके परिष्कारता देखो तुम निज घरे शासन कुशन भल खाऊ न थाओ तुम खाई करी चली दो बाहर घर को जे देखिबो किछि इंटेक अलगा प्रकार अछि तुम घर आसबो मु जाईଥିଲି मामा ता घर को बासन कुशन पूरा परिष्कार and it is human psychology. तुमको मु जदी कहबी तमे समस्त घरे कोन खाई परिबो समस्त घरे तमे पी परिबो मु उदाहरण स्वरूप ले कहबी तम काडी रे हिची कदली काठिया कदली बहुत बढ़िया फेवरेट होची ठाकुर से कदली आनी भोग कल बहुत टेस्टी कर आज ठाकुर पाई गले बढ़िया भोग खाई सेही कदली तमे जाय कोठा हरिजन बा अनटचेबल लोक घरु आनो तम साइकोलॉजी कहला अनटचेबल घरे ठाकुर पूजा रे लगे दियो. It will actually inspirit your value system, it will inspirit your psychology, you will create certain type of a disturbance. जेपन से तमे कहारा कास्ट न जानि जाओ तुमको बहुत भल लागिवो जेते बेले जण जण की कास्ट जानि देबो तुम मन रे गोटे प्रकार फिलुड आसीबो मोर से जो कास्ट से अलगा कास्ट थिला बोली आ मोर किछ असुविधा हे गेला कि तो अर्थ बुझन नै हमें मंदिर को जाउचे मंदिर रे विशेष करी अर्बन एरिया रे जेतिक जक नना से कोन सर्टिफाइड नना तमे ता घर को जाय जेजे बापा को आधार कार्ड देखि जाओ से केले ओडा कहि देबो कि मु को केते कोन जबन कर देबी पण पर कहि पर पिले उद्देश्य होची कास्ट सिस्टम ता एक्चुअली टोटली बेसलेस स्टिल देन वी रिजर्व इट इन आवर इंडियन सोसाइटी रे एक कास्ट सिस्टम पई हमें बहुत हर्डल सहिचे जेपन एटा टोटली वाइप आउट न होइचे हम लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन रे एटा गोटे हार्मफुल इफेक्ट आनी. नेक्स्ट क्लास एंड सोशल इनइक्वालिटी. Social inequality is universal. Every society is stratified. A Sorokin remark, an unstratified society with a real equality of its members has never been realized in the history of mankind. But society stratification sure as ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ stratification ଅଛି hostel girls, local girls, try to understand, and hostel boys. तीनटा कैटेगरी रे मु तुमको डिवाइड कर देली ताले एटा गोटे स्ट्रैटेजिएशन हलानी कि पुनी जदी मु कंसीडर करबी रेवेन्सा बेम्स रेवेन्सा रे किछि अछंती टेक्निकल रे किछि अछंती राष्ट्र रे किछि अछंती ग्रेन भीतर रे किछि अछंती ये गोटे स्ट्रैटिफिकेशन होछि ना नै जे कोन सी स्टेज रे हम देखिले सोसाइटी रे गोटे स्ट्रैटिफिकेशन आसीबो जति कोन सी स्ट्रैटिफिकेशन न आसिला गोटे ही स्ट्रैटिफिकेशन रिचर पुअर हम पाखरे इकोनॉमिकल इक्वालिटी आदौ नाही यदि इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी हमर थाता तले सोशल स्टेटस हम डेवलपमेंट जेपंती इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी नाही सोशल स्टेटस के डेवलपमेंट हे परिबनी एवं कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करे. Stratification is universal, but the base of stratification and form of stratification may vary.
Like caste class is also another form of stratification, which is found mainly in a modern industrial society. It is a product of economic progress and division of labor. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଆଜି ପ୍ଲସ ଟୁ ପାଠ ପଢୁଛ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏତେବେଳକୁ ତମମାନେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡା କିଏ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କିଏ ସୋସିଓଲୋଜି ଅନର୍ସ କିଏ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ କିଏ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିୟୁଇଟି ପାଇକିରି ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପାଠ ପଢୁଥିବ କିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବ ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନ ପଡିବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିବ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଠି କହିବା ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଇଜ ଦେୟାର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେମ ପଜିସନ ନାହିଁ सेम पोजीशन नहीं केतेक पिलांकर अछि विथ ए बुक ऑफ सोशियोलॉजी आ केतेक पिला अछंती कोन बुकलेस जो मन पर बही नै एटा को स्ट्रैटिफिकेशन हले केतेक पिला अछंती विथ ओडिया मीडियम केतेक पिला विथ इंग्लिश मीडियम एटा को स्ट्रैटिफिकेशन हला नि कि हले हमें स्ट्रैटिफिकेशन को टोटली वैनिश करि परिबा नाही आ स्ट्रैटिफिकेशन गोटे मॉडर्न एसेट्स जेते बेले इंडस्ट्रियल सोसाइटी आसी गला सेति मध्ये स्ट्रैटिफिकेशन आसी तमन को भितर किछि पिलांकर एम थिबो एमबीए करिया एमबीए कलो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जेते बेले तमे इंडस्ट्री रे पोस्टिंग पाइलो तमे धरा जाऊ कि मैनेजर पोस्ट जो माने न करचंदी कि डिग्री लेवल लो किबा अलगा कोनसी कोर्स एकेडमी हिसाब रे से माने धरा जाऊ रहिले कोन कि नॉर्मली गोटे कहिबे क्लरिकल लेवल जो माने जरा जो जस्ट मैट्रिक पास करिसन सेमान को पर्सनल असिस्टेंट हिसाब रे रखा गला ताले गोटे क्लास कंसीडरेशन गोटे ग्रेडेशन आसिला नि कि दैट स्ट्रैटिफिकेशन class is a social group which occupies specific position in a given society. It consists of people of a similar social status who regard one another as social equals. Once a class position is determined by property, achievement, and skill of an individual. ये क्लास रे मु उदाहरण स्वरूप कहबी हमें आज पाठ पढुछ तमे एठी नियर अबाउट अछि 15 स्टूडेंट्स और 20 स्टूडेंट्स ये 20 स्टूडेंट मानकर मिनिमम गोटे जिंस मास शेष को दरकार एक तारिख बेले को आनी तमर फीस कोन करिवो डिपॉजिट करिवो फीस तमर 1000 हो कि 1.5 हो कि 2000 हो समस्त को पई एटा होची कोन डिपॉजिट किंतु तमर सोर्स ऑफ इनकम कोन समस्त को समान ये बिजनेस सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर किबा आमे जदी कहबा कि गवर्नमेंट सेक्टर अछंती कि प्राइवेट सेक्टर अछंती ऑलमोस्ट कोन सुपर के इनकम करूचंती किंतु मनीटा सेम न नाही टाइमली डिपॉजिट होबाटा सेम न नाही तले आमे बेले बेले देखु हम मानको पई डिफरेंशिएशन आसे रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ मनी स्टिल देन द डिपॉजिट इज द डेट ऑफ डिपोजिशन इट इज वन एंड ऑल सेम पर्सन class is a social group which occupy specific position in a given society. It consists of people of a similar status. Social status who regard one another as social equals. One's class position is determined by property, achievement, and skill of an individual. Members of a particular class share similar opportunities, similar lifestyle, similar economic status, live in a similar class situation with a similar class concept. Okay, students. Take. ये समाज रे दीटा जिंस वर्तमान मॉडर्न एज रे निहाती जरूरी गोटा होची इकोनॉमी आ गोटा होची सोशल स्टेटस समस्तंकर दरकार होची मनी मॉनिटरी जदी हमें सैटिस्फैक्शन हेले हमर जदी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हला तले हम सोशल स्टेटस मेंटेन करबा मु उदाहरण स्वरूप कहबी तमे आज पाठ पढछ तम घर लोक किछि एक्सपेंस करतनी बोली तमे पाठ पढुछ तमरी एज रे जियो पिला माने थिबे तुम क्लास रो तम घर लोक घरे झगड़ा करिबनी जियो को बागर करबा ये धरा जो मैट्रिक पास करके घर लोक कहले काहे कि रहबो घरे तके उठे देबा घर लोक को मुंड चक्कर दबने तने पहिले मु कहबा उद्देश्य इकोनॉमिक की कैपेबिलिटी हम जे हमर स्टेटस अछि न नै तम मन के भीतर मु देखो जे तम सोशियोलॉजी रे जियो पिला गुडा बहुत धनी हो सम आ पॉलिटिकल साइंस रे मते तमे भी बहुत छ तमर रिचेस्ट पर्सनालिटी अछि काहे कि रिचेस्ट पर्सनालिटी तम मनटा केबेले दुख नै मनटा खुशी अछि माने तम पाखरे विटामिन एम सबले